संवार्ता डिसेंबर मासस्य विशिष्टं वार्तापत्रम् वृत्तनिवेदिका रेणुका बोकारे। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयः तथा च भारतीय भाषा समितिः इत्यनयोः संयुक्त तत्त्वावधाने व्याकरणविभागेन आयोजिता नवशब्दनिर्माणविषयिणी द्विदिवसीया राष्ट्रीयकार्यशाला सद्यः एव सम्पन्ना। संस्कृतभाषायां नवशब्दनिर्मितेः अपरिमितं सामर्थ्यं वर्तते इति प्रतिपादनं कार्यशालायाः उद्घाटनसमारोहे प्रमुखातिथिना डॉक्टर भूषणकुमार उपाध्याय वर्येण अकारि। भारतीय संस्कृतिः विश्वव्यापिनी वर्तते इति आचार्य यशवंत पाठक महोदयेन प्रत्यपादि। विश्वविद्यालयस्य अन्ताराष्ट्रीय व्यवहारकेन्द्रं तथा च अन्ताराष्ट्रीय सांस्कृतिक अभ्यासकेन्द्रम् इत्यनयोः संयुक्त तत्त्वावधाने आयोजितायाम् एकदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठ्यां तेन अयं विचारः उपस्थापितः। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयः महिलाः स्वयंसिद्धाः कुर्वाणेषु अग्रेसरः। महाराष्ट्रस्य मान्यानां राज्यपाल महोदयानां निर्देशेन स्वयंसिद्ध उपक्रमः सज्जीकृतः विद्यते। नासिकनगरे प्रचाल्यमाने 21 दिनात्मिके पौरोहित्य प्रशिक्षण कार्यक्रमे विद्यापीठ अनुदान आयोगस्य उपसचिवा श्रीमती अनुजा सक्सेना उपास्थात्। विश्वविद्यालयस्य प्रशिक्षणस्य च विषये संलापः तया कृतः। प्रज्ञाभारती डॉक्टर वर्णेकर महोदयेन श्रम एव जयते इति नवयुगस्य मन्त्रः प्रोक्तः इति प्रतिपादनं डॉक्टर स्वानन्दपुण्डवर्येण संस्कृतभाषा तथा साहित्य विभागेन आयोजितायां प्रज्ञाभारती डॉक्टर श्रीभा वर्णेकर स्मृतिव्याख्यानमालायाम् अक्रियत। विश्वविद्यालयस्य योग विज्ञान समग्र स्वास्थ्य विभागेन द्वितीयः अन्ताराष्ट्रीय ध्यान दिवसः सफलतया आचरितः। विश्वविद्यालयस्य संवार्ताख्यस्य वार्ता प्रसारण कार्यक्रमस्य मान्यानां कुलसचिवानां डॉक्टर रोशन अलोने वर्याणां समेषाम् अधिष्ठातॄणां हस्तैः विमोचनम् अभूत्। उपक्रमम् अमुं मान्याः कुलगुरवः प्रेरणापूर्णैः वचोभिः अस्ताविषुः। उपक्रमेऽस्मिन् प्रतिमासं विश्वविद्यालयस्य कार्यक्रमाः उपलब्धयः प्रसारयिष्यन्ते। विश्वविद्यालयेन वीरबालदिवसम् उपलक्ष्य विविधकार्यक्रमाणाम् आयोजनं व्यधायि। तत्र विशेषव्याख्यानं, निबन्धलेखनस्पर्धा, कवितालेखनस्पर्धा, घोषवाक्यस्पर्धा, प्रश्नमञ्जुषा इत्युपक्रमाणाम् अन्तर्भावः आसीत्। विश्वविद्यालयस्य कुलगुरवः मान्याः डॉक्टर अतुलवैद्यमहोदयाः विज्ञानभारत्याः विदर्भप्रान्तस्य अध्यक्षत्वं भूषयिष्यन्ति। विश्वविद्यालयस्य डॉक्टर जिस्कार ज्ञानस्रोत केन्द्रस्य सञ्चालकाय डॉक्टर दीपक कापडे महोदयाय भारतसर्वकारस्य बौद्धिक संपदा विभागेन विशिष्टाधिकारः प्रादायि। समन्वित ग्रंथालय व्यवस्थापन प्रणाल्याधारिता सूचना प्रसार व्यवस्था इति संशोधनाय तेनायम् अधिकारः प्राप्तः। विश्वविद्यालयस्य कृते प्राप्तोऽयं प्रथम एव विशिष्टाधिकारो वर्तते। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयाय सिंगापुरस्थेन अरविंद योग एंड नॉलेज फाउंडेशन इत्यनेन श्रेष्ठ संशोधन नवोपक्रम पुरस्कारः प्रदत्तः। तथैव तत्पक्षतः एव संस्कृत तथा संस्कृतेतर भाषा संकायस्य अधिष्ठात्री प्रोफेसर कविता होले वर्या शाश्वत संशोधन शिक्षण श्रेण्यां विशिष्ट प्राध्यापक पुरस्कारेण तथा च शास्त्रविद्या गुरुकुलस्य सहायकाचार्या डॉक्टर श्वेता शर्मा संशोधन नैपुण्य पुरस्कारेण च सभाजिते। विश्वविद्यालयस्य शास्त्रविद्या गुरुकुलस्य सहायक प्राध्यापकः डॉक्टर राघवेंद्र भट्टवर्यः विनस इंटरनेशनल फाउंडेशन पक्षतः भारतीय ज्ञान परंपरायाः उत्कृष्टः संशोधकः इति सन्मानेन सभाजितः। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठम नांदेड इत्यत्र आयोजिते 27 महाराष्ट्र राज्य अंतर्विद्यापीठ क्रीडा महोत्सवे कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य महिला कबड्डी गणेन उत्कृष्टं प्रदर्शनं विधाय द्वितीयः क्रमाङ्कः प्राप्तः। वार्ता समाप्ता। शुभदिनम्।